कुछ लोग डॉक्टरेट किए हुए भी हैं पार्टिसिपेंट हमारे। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी अपने अनुभव को शेयर करें, अपने मन की बात रखें। ये आदरणीय षडाक्षरी साहब जो डायरेक्टर हैं, इनने अपने भले मुख्यालय के निर्देश पर ये आयोजन किया हो, मगर मैं तो मानूंगा कि ये मध्य प्रदेश की हर जगह, हर सोसाइटी में, हर गांव में ऐसे आयोजन की जरूरत है। अवेयरनेस वाला कार्यक्रम है। अन्नदाता तभी जो है वो बनेगा, संपन्न बनेगा, जब हम इस प्रकार की जागरूकता या नई नई चीजों को अपनाएंगे। और फर्टिलाइजर का जो अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, इस पर तो हमको निश्चित रूप से नियंत्रण करने की जरूरत है। 3 एकड़ डीएपी लोग 1 एकड़ में डालने लगे हैं, 3 बोरी, जबकि 1 बोरी से ज्यादा का रिकमेंडेशन ही नहीं है, मगर 3-3, 2 बोरी, 3 बोरी, 5 बोरी मांगते हैं। मतलब उनको लगता है कि सारा डीएपी अगर एक ही खेत में डाल दिया जाए तो बहुत सारी फसल, और लोग डीएपी को भी कहते खड़ी फसल में डालने लगे हैं, जबकि डीएपी और आपका सुपर, म्यूरेट ऑफ पोटास, एनपीके, ये सब बेसल डोज में दिए जाते हैं। मतलब भूमि जो बुवाई के पहले खेत में इनको डालना चाहिए। और टॉप ड्रेसिंग मतलब खड़ी फसल में सिर्फ यूरिया का ही ब्रॉडकास्टिंग की जाती है, और इसके अलावा और कोई फर्टिलाइजर नहीं जो खड़ी फसल में दिया जाता हो। मगर आजकल वो भी नकल चल पड़ी है साहब, तो उल्टा सीधा किसान कर रहा है। इसकी जगह हमको जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से हमारी मध्य प्रदेश की कृषि अभी बर्बाद होने से बच जाएगी। आज की इस संगोष्ठी में हम लोगों ने जो हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा की, उनकी वार्ता को आपने सुना। हमारे बीच में तकनीकी रूप से सक्षम हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं वो हैं, और वो आपको इंग्लिश में कुछ बातें बताएंगे जो कि सिंचाई पंप सेट है, उसमें आपको कितनी क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता है, जिससे आप कितनी बिजली को बचत कर पाएंगे, और इसके साथ ही जो है आप न केवल अपने बिजली बिल को कम कर पाएंगे, बल्कि आप देश के लिए बिजली का जो की बचत से बाकी लोगों को भी लाभान्वित कर पाएंगे। तो मेरा आग्रह होगा कि इस विषय को भी बहुत गंभीरता से आप सुने, और थोड़ा तकनीकी जरूर है लेकिन हम सब के लिए बहुत लाभकारी है। और मुझे लगता है कि इससे हम लोग एक नया सबक सीखकर, जो अभी हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें सिंचाई के लिए कितनी क्षमता का, कितने हॉर्स पावर का की मोटर की ज़रूरत है, वो उसके बारे में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर षडाक्षरी सर आपसे चर्चा करेंगे। सभी को नमस्कार। आई एम Shadakhari, Director ICM Bhopal. Today I just made it as point to discuss with all of you with the support of Pariyar sir. Pariyar sir is going to translate in Hindi. I am going to discuss in English. The important aspect today I have considered is how to select a right pump set for your specific borewell. सही पंप सेट का चयन कैसे करें, इसके बारे में ये वार्ता है, और उसके जो तकनीकी बिंदु हैं वो आप तक हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। Respected participants, water is one of the important resource for the production of any agri produce. जो जल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए है, और जो जल खेती के लिए आवश्यक है उसके संरक्षण के लिए हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। You have to use appropriate quantity of water to get a better productivity, so that the quality of grain will improve. उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जितने जल की आवश्यकता है उतना ही उपयोग करना चाहिए, अन्यथा जल की भी बर्बादी होती है और उत्पादकता भी इससे प्रभावित होती है। I am happy to share with you all. I am also a practicing farmer, though I am working as a director here. So I undergone a lot of, I did lot of experimentation with respect to improving the yield is concerned. One of the most important factor, most of the farmers making the mistake is excess usage of water. जो जल का उपयोग है वो हम अतिरेक के रूप में कर रहे हैं, और उसको न केवल हमें जितनी आवश्यकता है उसका ही उपयोग, उतना ही उसका हम उपयोग करें, और उसके संरक्षण के साथ साथ
यदि आप सिंचाई में जितनी आवश्यकता है उतनी सिंचाई में जल का उपयोग करेंगे तो आपकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। Why they use excess water? There is one reason. They have got abundant water in their borewell or in their open well, or they are using a higher level capacity motors to pump the water. पानी का हम जो ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं उसके पीछे तो यह है कि हमारे पास में चूँकि पानी है तो हम जितना संतुलित उपयोग करना चाहिए उससे ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि उसको लिफ्ट करने के लिए, सिंचाई के लिए उपयोग करने के लिए जितने हॉर्स पावर की मोटर की आवश्यकता है उससे ज़्यादा हॉर्स पावर की मोटर का हम उपयोग कर रहे हैं। Whenever you submit your application for a loan, or if you meet any vendor to supply a pump set for you, just they are asking you how much HP is required without knowing exactly how much water is available in your borewell and at what depth it is available in your borewell. आपके बोरवेल में कितनी गहराई पर पानी है और बोरवेल में कितना पानी है उसको देखते हुए ही आपके जो सिंचाई के पंप की क्षमता है उसका निर्धारण होना चाहिए, लेकिन इसका आकलन हम लोग तकनीकी रूप से नहीं करते हैं। According to me, in India, most of the farmers are going for higher level capacity. I think more than 40 to 50% of the people are doing like that. And yesterday got a chance to interact with one of the dealer who is selling borewells pumps in Bhopal. He told people are considering as a prestige issue to put a more capacity pump set. लोगों ने जितने बड़ी अधिक क्षमता का पंप सेट उपयोग करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है उनको लगता है कि मैं अधिक क्षमता वाला पंप सेट उपयोग करूंगा तो मेरा उससे जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसमें वृद्धि होगी। This is totally a wrong concept. Here there are two things we should consider. If you put more water to your field, your productivity will decrease. At the same time, the investment cost you are making to put a pump in your field, you have to pay more than 20 to 30% than what is the actual cost is. इसमें दो तरह के नुकसान हैं। एक तो आपकी उत्पादन लागत इससे बढ़ती है और दूसरा जो है अधिक पानी के उपयोग से आपकी जो उत्पादकता है वो भी प्रभावित होती है। So because of this reason we have selected this topic to make all the farmers of this country to understand how much HP of power, how much stage pump set is required for them before they enter into the bank or before they meet the particular vendor to purchase a pump set. इन्हीं दो कारणों को देखते हुए जब भी सिंचाई के लिए आपको सिंचाई के लिए पंप खरीदना हो तो यदि बैंक में जाते हैं तो इसका आकलन करें या डीलर से आप सीधे खरीद रहे हों तो तकनीकी रूप से आकलन करें कि आपको कितनी क्षमता के पंप सेट की आवश्यकता है। Here one important thing is you are saving lot of power, you are saving lot of underground water, and you are improving productivity, and ultimately the future generation do not have the problem of water scarcity. देखिए इससे चार तरह की चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो यह है कि आपका जो बिजली की बचत है वो हो रही है। दूसरा आपकी उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। तीसरा यह है कि जो जल संरक्षण है, जल की बचत से आगामी पीढ़ी में जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है और इसको हमें करने की आवश्यकता है। I found in my villages, since in Karnataka it is free power, what people are doing actually in the field is they'll switch on the motor, they will not at all bother how much quantity we are supposed to put for each plant. What they do, whatever the time it is going to pump, let it pump, and they came back. Actually, it affects in two ways. One is it stops the aeration inside the plant. Second is due to that packing of water, all the nutrients, from off-feet level should go to the deeper level so that the absorption roots cannot able to pick those nutrients.
पानी की अधिकता का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो पानी के जमने, पानी ज़्यादा होने से जो हमारा न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे चले जाते हैं और जड़ें उन तक नहीं जड़ जो है वहाँ तक नहीं होने से पौधे को उसका लाभ नहीं मिलता है। और दूसरा ये भी होता है कि कई बार जो है सड़न जैसी स्थितियाँ भी वहाँ पर उत्पन्न होने लगती हैं। I think I made it point very clear now. You must know how much water you have to give for a plant for a specific duration. Say for example, during summer the requirement of water is different. During winter the requirement of the plant is different. During other season you have to plant a crop. In which season which quantity of water is required for which plant. सभी जो हमारे पौधे हैं या हमारी फसलें हैं उनको सीजन के हिसाब से आपके गर्मी में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी, जो हमारा वर्षा काल है बरसात में पानी की कम आवश्यकता होगी, जो हमारी शीत ऋतु है वहाँ पर भी पानी की तुलनात्मक रूप से कम आवश्यकता होगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा फसल है या हमारे जो पौधे हैं उनको ऋतु के हिसाब से जितने पानी की आवश्यकता है उतने पानी की ही सिंचाई की जाए। Okay. Now after knowing this, I want to save lots of money in your pocket. Reason is, we are going to improve the productivity. We are going to put an appropriate pump in your borewell or an open well, and we are going to put only the required quantity of water in the field so that the country is going to prosper over a longer period of time, and we are going to save lots of electricity from the government. आपके जो बोरवेल हैं और बोरवेल में आपके माध्यम से जितने आप क्षमता की आवश्यकता है उससे आप बिजली की बचत तो कर ही रहे हैं, उसके साथ ही आप पानी का संरक्षण भी कर रहे होते हैं और इससे जो है पानी के संरक्षण से भविष्य में पानी की जो कमी है उससे भी आपको बचने के लिए एक बहुत बड़ा आप तरीका अपना रहे हैं। Now you see this graph. Now I am coming to this graph. In this graph you will find in the left side, the depth of the borewell up to 1300 feet. Can you make it bigger? थोड़ा सा बड़ा करो। Just see, left side is one is in meters, other one is in feet. Can you able to see on the screen? Yeah. देखिए बाएं तरफ में जो ग्राफ है, ग्राफ में जो बायां तरफ है, बाएं तरफ में जो बोरवेल है उसकी गहराई को दिखाया गया है। द डेप्थ ऑफ द बोरवेल। हाँ, बोरवेल की गहराई को दिखाया गया है और जो आपका जो हॉरिजॉन्टल है उसमें दिखाया गया है कि पानी कितना है। ओके, लेफ्ट साइड मीटर्स में है और फीट में है एंड बॉटम में द आउटपुट रेट, दैट इज हाउ मच discharge is going to take place while pumping a water using half HP, 3/4 HP, 1 HP, 1 HP, 2 HP, 3 HP and 5 HP. You can able to see on the screen. देखिए गहराई के हिसाब से 2 HP 600 जो हमारा 600 फीट की गहराई है उसमें 2 HP में कितना पानी आ रहा है। 400 जो फीट है उसमें 1 HP में कितना पानी आ रहा है। 300 फीट पर जो हमारा 1.5 HP की मोटर है वो कितना पानी दे रही है। Sir made a mistake. I repeat again. The x-axis says how much discharge is taking place, whether you use half HP, 3/4 or whatever it may be. We have shown in the graph up to 5 HP. देखिए in the bottom 1 gallon, 2 gallon, it went up to 29 gallons. Can you able to see? Otherwise in meter cube per second 1 gallon is equal to 4.5 liters. That discharge has been given per minute. Gallons, what happened? Screen में नहीं आता, gallons per minute. Yeah. Can you able to see gallons per minute? It went up to, what is that number? I cannot able to read it, sir. 20, 25 or 26? This one is
Bottom show. Bottom show. Show me the bottom. What? Yeah. This one is Yeah, 25 gallons per minute. That means 25 into 4.5 liters. More than 100 liters per minute. In the bottom, this thing is showing. Still in the bottom, it shows in the meter cube per minute also. 1 meter cube is equal to 1000 liters. Okay. Now, based on the depth of the bore well, you have to select based on the actual output which you want it for your specific field. Say for example, a farmer may be having 1 acre land, the other farmer may be having 10 acres land. The 1 acre land farmer need not go for 5 HP motor. Whereas, if the borewell may output ज़्यादा है, that is yield is more, you must go for an appropriate quantity between 7.5 gallons per minute to 21.5 gallons per minute. That is the operating range they have mentioned in this graph sheet. देखिए जो बोरवेल की गहराई है और आपको कितने पानी की आवश्यकता है, उसके हिसाब से जो है आपका पंप सेट का एचपी को आपको निर्धारित करना है। आपकी पानी की आवश्यकता ज़्यादा है और आपके पास में ज़्यादा भूमि है, तो आपका जो एचपी है वो पावर बढ़ेगा, और यदि आपको आपके पास में भूमि कम है तो फिर वो कम एचपी में भी आप जितनी पानी की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर पाएंगे। In this graph, we are given two things. One is pump operating range. You can see in the top pump operating range. That means whatever the pump you are using, either 5 HP, 3 HP, 2 HP, 1 HP, half HP, you have to operate only in this range. That is the maximum output you can able to derive. Please. देखिए जो ऊपर पंप की परिचालन क्षमता है उसको दिखाया गया है कि 5 HP, 3 HP, 2 HP, 1 HP में जो है कितनी गहराई पे कितना पानी है, कितना आपको आउटपुट मिलेगा, वो इसमें दिखाया गया है। And one more this thing is in the center. You see this is the best efficiency range. That means if you put a specific HP of the motor, whether it works in 90% efficiency, 80%, 70%, 60%, it depends on the kind of motor you are using for a specific depth of the borewell. Sir, पानी का जो मोटर है वो मोटर की जो क्षमता है, सर ने जैसा बताया, तो उस क्षमता के हिसाब से भी जो है जो गहराई है, गहराई के हिसाब से फिर आपको पानी उतना मिलता है, तो क्षमता भी बहुत महत्वपूर्ण है। You just see in the left side of the graph 1 to 3 gallons per minute. Sorry, 1 to 4 gallons per minute. You are not supposed to operate the motor in that range. If you operate the motor in that range, there is a chances of burning out of your coil or the winding. देखिए 101 The dotted line. Yeah. The dotted line. एक से हाँ, जो ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं 1300 जो जहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर यदि आप पंप सेट को चलाते हैं तो उसकी कॉइल जो है या मोटर जलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। Again in the right side also, after 18 gallons per minute, if you start to operate, you will not get the optimum efficiency because the curve is coming down. Just see the curve. The curve is coming down. It means you are not supposed to operate beyond that operating range. बिल्कुल सही है। 3 HP में भी इसी तरह का बताया गया है। 2 HP में भी आपको जो डॉटेड लाइन है वो भी यही इंडिकेट कर रही हैं। 1.5 HP में भी देखिए डॉटेड लाइन्स दिख रही हैं। 1 HP में भी इसी तरह है, और 3/4 HP और आधा HP जो है उसमें भी इसी तरह से जो मैंने पहले आपको बताया था वो संभावनाएं हो सकती हैं। Now you see, for example, half HP motor maximum lifting capacity is up to 180 feet. Can you able to see? जो आधा HP है वो 180 फीट तक का ही पानी खींच सकती है। 3/4 HP it goes up to 260 feet. जो 3/4 HP की मोटर है वो 260-270 फीट की गहराई तक 1 HP goes up to 380 feet.
और 1 HP की मोटर जो है 380 फीट गहराई तक का पानी खींच सकती है। 1.5 HP goes up to 470 feet. 470 फीट की गहराई तक के लिए 1.5 HP की मोटर की आवश्यकता होगी। 2 HP goes up to 600 feet. 600 फीट तक की यदि गहराई है तो 2 HP की मोटर ही आपके लिए पर्याप्त होगी। 3 HP goes up to 800 feet. 800 फीट तक की गहराई के लिए 3 HP की मोटर आपके लिए पर्याप्त होगी। 5 HP goes up to 1300 and plus feet. 1300 और उससे अधिक की गहराई के लिए आपको जो है 5 HP की मोटर की आवश्यकता होगी। Now, what is the best operating range? Just see, for 5 HP, it is 100 and 1120 feet to, it comes to 630 feet, sorry, 580 feet. Can you able to see this graph? Best efficiency range. If you see this plot, you see this graph point, it goes to the point 1220 to, it comes here 580 feet. In that range only you have to use 5 HP. Please remember, this is a standard company motor. This graph has been given by the company performance parameter. On the basis of this graph I am explaining to you. Suppose if you purchase a local pump, this graph may not suits for you. जो आपकी अच्छी कंपनियों की या जो हमारी प्रतिष्ठित कंपनियां हैं उनकी मोटर के लिए इस तरह के ग्राफ के अनुसार आपको आउटपुट मिलेगा और उतने एचपी की मोटर की आवश्यकता होगी। यदि आपने लोकल हमारी जो मोटर्स हैं उनका उपयोग किया है तो इस ग्राफ में दिए गए जो भी आंकड़े हैं वो उसके लिए उसमें वो मैच नहीं करेंगे। Yeah, when you are going for to purchase the motor, please ask the supplier to give discharge versus depth graph. जब भी आप मोटर को खरीदने जाएं तो आप गहराई और पानी कितना उससे आएगा उसके बारे में अपने डीलर से या आपका जो बैंक का क्षेत्राधिकारी है उससे चर्चा करें। Then being a farmer, you must intelligently decide whether you want 7.5 gallons per minute or 17.5 gallons per minute. In that range only you have to select it. You may select 9, you may select 11, you may select 13. The best range is 14 gallons per minute with respect to this graph is concerned. हाँ सर, इस ग्राफ में जो है ना तो 14 गैलन जो है वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है कि 14 गैलन जो है एक ऑप्टिमम है जिसका आपको लाभ मिल सकता है। What is the common mistake people are doing? See, I can get 13 or 14 gallons per minute even using off HP if my borewell depth is below 200 feet. I need not go for 5 HP. There are people, when your borewell depth is only 200 feet, when you require only 14 gallons per minute, you are simply going for 5 HP, unnecessarily wasting money for pipe, borewell cost, pump cost and cabling cost. And electricity charges. It will fetch us not less than 40 to 50,000 rupees per set. देखिए आपके यदि आपको 200 फीट की गहराई पे पानी है और आपको आवश्यकता जो है मान लीजिए कि 14 गैलन प्रति मिनट की है तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि 5 और 6 एचपी की कतई आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा आधा एचपी या 1 एचपी तक जाएं ताकि उससे न केवल आपका जो विनियोग की लागत है वो कम हो, मोटर की लागत कम हो, इसके साथ ही आपका जो बिजली का बिल जो लगातार आता है उसमें भी आपको इसका फायदा होगा। Suppose if you are paying electricity bill per kilowatt hour, just imagine how much unnecessarily you are paying every month by using maximum HP level motor. That is not at all advisable. Just see this graph. This is the performance graph given by the company, not by me. At what point range you are supposed to operate, that you please decide well in advance based on your requirement and based on the availability of water in your borewell. So, yield test is a must before you install a pump set in your borewell. बिल्कुल सही है कि गहराई और आपकी आवश्यकता इन दोनों को देखते हुए ही आपके जो एचपी जो क्षमता है उसका निर्धारण होना चाहिए।
Once you made this simple analysis for about 10 minutes by sitting with your dealer, you are not saving for 1 day or 1 month. Whatever the number of days that pump is giving service to you, say for example one pump, if you have got a standard company, it gives service for 20 years, 25 years. I have a pump, Texmo brand, I used it for 26 years in my garden. So 26 years, if you are not using, you are not selecting an appropriate trend, unnecessarily you are paying, that means the cost, extra cost you are paying is much more than the actual cost of the pump set. देखिए, आप ये 10 मिनट का तकनीकी परीक्षण है और ये 10 मिनट का तकनीकी परीक्षण आपको आगे 20 से 25 साल तक, जब तक आप मोटर का उपयोग करेंगे, तब तक आपको लगातार बचत देगा, तब तक आपको बिजली की बचत होगी, आपके पैसों की बचत होगी और सबसे बड़ी चीज है कि पानी का संरक्षण भी होगा. Most important thing is the depth of the borewell, the actual quantity of water requirement and the availability of yield in your borewell. Once you understand this, you must explain to the dealer, this is my yield in my borewell, this is the depth I got the water while drilling the borewell, so that I want only in this range. Maybe suppose 1 HP badal ke you buy 1.8, 1.5 HP, no problem. But in the place of 1 HP, don't buy 5 HP. 1.5 okay, because during summer the quantity of yield is going to vary in the borewell. See, during rainy season you will get more water, whereas during summer you will get less water. Suppose if you got a tank near to your place, you will get plenty of water. So it all depends on the specific condition of the particular place. इस बात को भी ध्यान रखें कि आपको आवश्यकता यदि तकनीकी रूप से 1 HP की है, तो आपको 12 महीने अधिकतम पानी चाहिए, तो 1.5 HP के तरफ जाएंगे तो गर्मी के दिनों में भी आपका जो यील्ड है वो आपके लिए जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करेगा. So you should be the better judge to decide what stage pump is required, what capacity is pump required, so that you can save lots of money. And if you put that money, that billing charge, in the FD, you can buy that one more new pump set. If you say whatever the money you are saving during that time, if you put it in FD, once the replacement of the cost machines comes, after 20 years or 25 years, you need not worry. The same money you put it here and buy the new one. आप इस तरह से जो है भविष्य में जब भी आपको नई मोटर की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए इतनी बचत हो चुकी होगी कि आप आसानी से नई मशीन खरीद पाएंगे. So this is the information I want to share with you, and this is little technical to read, but you could try 1 or 2 days and trial and error if you understand this concept. Probably with a normal with half HP difference you can buy, I don't mind, but don't go beyond that. My request is, make all your pack secretaries to understand this, and whenever farmer comes for a loan, the field officer should know how to read this graph. He must get the information from the farmer, how much yield, what depth and what HP is required, how much land he is having, how many hours electricity he is going to use it. Based on these factors, kindly decide the appropriate HP of the motor, and you are going to save a lot of money for you. In the long run, you are going to be a winner. आज का जो हमारा 2 घंटे की संगोष्ठी थी, उसमें कुछ तकनीकी विषयों में भी चर्चा हुई और कृषि मशीनीकरण के बारे में हमारे मुख्य वार्ताकार कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर श्री हजारी साहब ने आपको काफ़ी जानकारी दी. मैं सभी जो हमारे किसान भाई यहाँ हम लोगों को सुन रहे हैं और जो किसान भाई हमारे बीच में रहे हैं, उन सभी का मैं इस संगोष्ठी में उपस्थिति और सहभागिता के लिए ICM भोपाल की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ. उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ. और मैं ये भी जानकारी आपको देना चाहूँगा कि भविष्य में हम लोग जो हैं